Good evening, everyone. And happy Vijay Dashami to all of you. देखते देखते दुर्गा पूजा भी खत्म हो गया. अब इसके बाद दीपावली भी खत्म हो जाएगा, फिर छठ पूजा खत्म हो जाएगा, फिर ऑलमोस्ट तुम लोग का यूनिट टेस्ट है. यस, शुभ विजय, प्रणाम नीलम. उसके बाद तुम लोग को जनवरी में प्री बोर्ड हो जाएगा, फिर सरस्वती पूजा, देन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो स्टार्ट. सो आई थिंक दिस इज द सेकेंड क्लास फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसके बाद हम लोग जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे. ओके, सो देन वी कैन से the first book is complete. So today's the first thing is Maxwell's equation. So basically yes, Shubha Vijaya everyone. Basically Maxwell modified the whole electromagnetic equation, and according to Maxwell, the whole electromagnet is based on 4 laws. So Maxwell, I just want to read them first, and then I try to show you how these things happen. Maxwell found that all the basic principles of electromagnetism, all the basic principles of electromagnetism can be formulated in terms of 4 fundamental equation called Maxwell equation. So basically Maxwell give 4 fundamental equation, and on the basis of that he correlate the all electromagnetism. The number one is Gauss's law of electrostatic. Number one is Gauss's law of electrostatic. Gauss's law of electrostatics. And we know this one, this Gauss's law of electrostatic, ki E dot ds, that is the electric flux, is 1 by epsilon naught q enclosed. That is the first law for electromagnetism. This law states that the electric flux through a closed surface S is 1 by epsilon naught times the total charge q enclosed by the surface. That means you can say this is equals to electric flux. So what do you mean by electric flux? Electric flux is E dot ds, that is the 1 by epsilon naught times q enclosed. What about the second law? Gauss's law of magnetism. The second law is Gauss's law of magnetism. So what happened in Gauss's law of magnetism? Magnetic flux, that is equals to integration of B dot ds is equals to 0. Why it is equals to 0? From this, as we know, ki single pole not possible or monopole not possible for magnet. So the Q enclosed is actually 0 here. Means M enclosed, the pole strength, the net pole strength is always 0. So in a closed surface, your net magnetic flux is 0. So Gauss's law of electrostatic and Gauss's law of magnetism, these are the 2 laws in which the first law we also know, the second one we also know. The third one, third one is Faraday's law of electromagnetic induction. The third one is Faraday's law of electromagnetic induction. So what happened in Faraday's law of electromagnetic induction? Induced EMF that is equals to E dot dl, that is equals to minus d phi E by dt, minus d phi E by dt. This, so Faraday's law of electromagnetic induction, this law tells that a changing magnetic field induce an electric field according to
this law, this the induced EMF set up in a closed circuit equals to net change in magnetic flux. So, sorry, this is the B. Net change in magnetic flux linked with the closed circuit. What do you mean by that? That means we know change in magnetic flux per unit time, that change in flux produce EMF, and in terms of electric field, E dot dl is also produce electric field. That means electric field and magnetic field, they are related, means the magnetic flux can change, can create electric field, and electric field can create magnetic field. That means that's why in electromagnetic induction or electromagnetic wave, electric field and magnetic field both are present. So this equation is very, very important in terms of, this equation is very, very important in terms of relation between electric field and magnetic field. Sometimes this type of question asked in entrance exam, which is related to electric field and magnetic field, or from magnetic flux you can find out electric field. So by using this formula you can find out this. Suppose they give you the magnetic field, they give you the surface area, so you can find out the flux, and change in flux you can find out the EMF, and now they can ask you find the value of electric field. So you can understand dl, so circumference of this you get the electric field. So this one is very, very important, the third law, the third one. And the fourth one we already know from the first lecture of electromagnetic wave, modified Ampere circuital law. Modified Ampere circuital law, Ampere's law, yeah, Ampere circuital law, in which we know B dot dl, that is mu naught I C plus ID, and I think all of you know IC is the conduction current and ID is the ID is which current? Anyone tell me? Hello? Hello? Displacement current. Displacement current, very good. And this displacement current is epsilon naught d phi E by dt. So these are the four law given by Maxwell, and on the basis of that four law, whole electromagnet, means you can say from electrostatics to electromagnet, the whole electromagnet basically depends on this four law. So that's why this four law is very, very important. That's why this four law is very, very important. So if we see it properly, you understand one thing: the first two law are related with the electric flux and magnetic flux, E dot ds, B dot ds, and the last two law are related with the means electric field and area vector, magnetic field and area vector, and rest two law are electric field and length vector, magnetic field and length vector. If you notice it, then you understand E dot ds, B dot ds, E dot dl, B dot dl. So how you remember that? You remember E dot ds, one law, B dot ds, second law, E dot dl, third law, B dot dl, fourth law. So these are the four law which is called the Maxwell's equation. Very, very important. Is it okay, everyone? My next very, very important is energy density of a electromagnetic wave. Very, very important. Energy density of electromagnetic wave. Very, very important. Energy density for electromagnetic wave. So suppose, as we know, if we represent EY, electric field, and EM, amplitude
or maximum value of electric field sine omega t minus 2 pi by lambda x, where x is the direction of propagation and electric field is propagated along the y-x plane. And similarly, we can write by here bz, then bz is the magnetic field propagated in the zx plane. So bm, that part is as it is, 2 pi by lambda into x. So these are the electric field and magnetic field. If you want, you can represent the SI unit also. So E is dV by dt, so volt per meter, and this one is Tesla. So you can, if you want, you can write the unit also. So energy density, total energy density of electromagnetic wave is equals to energy density due to electric field plus energy density due to magnetic field. Now we know from electrostatics, means from capacitor, we know from capacitor that energy density for electric field is half epsilon naught E square plus half B square by mu naught. That is for from electrostatic, and that is from mutual induction, means for the from inductor. We already proved this. This one is for electrostatic and this one is for magnetostatic. The energy density, and what do you mean by energy density? Energy density is energy stored per unit volume. So if you want to write, see E, the actually that E is that whole equation. That means Em sine omega t minus 2 pi by lambda x, and B means Bm sine omega t minus 2 pi by lambda x. Now, if we want to write the energy density average, so I think you all remember integration of sine square omega t minus 2 pi by lambda x 0 to full time period 2 pi by lambda dt, that is equals to pi by omega. Hope you all remember from RMS value as well as from the average power consumed, where you have E P average, that is E into I, and then you have sine and cos, and then you have the sine square form, and divided by 2 pi by omega. So basically what happened, this 2 pi cancel, and you get the half and the peak value. So what I want to say, the average energy density, same way you can say half energy density of the peak value plus half energy density of the peak value. What do you mean by that? That means half 1 by 2 epsilon naught E naught square, or as it is Em, you can write Em also, Em square plus half Bm square by mu naught. So basically what you have, 1 by 4 epsilon naught Em square plus 1 by 4 Bm square by mu naught. That means this is the overall in terms of equation, and that is the average. So average, in average always you have a half into peak value. If you remember the P average, so then you get E maximum I maximum by 2 into cos phi. That 1 by 2 because of the average value of the sine square theta. Similarly, in case of RMS value also, you have a sine square or cos square theta, and then you have a 1 by 2, and because of the root you have Im by root 2 or Em by root 2. But from if you remove the root, then you have root mean square, mean and square. So due to square you have this half value. So here the average and mean, so you have this half value. So overall the average density is 1 by 4 epsilon naught Em
plus 1 by 4 bm square by mu naught. Now, up to this, is it okay for everyone? You all understand what I want to say? Because these E and B, these are the wave equation. So as they are wave equation, you have to find out the average value because they are itself sine square form. As they are square form, so we need the average value. If they are not square form, then we need the RMS value. As they are square form, so we need only the average value. Is it okay, everyone? We can directly write this, and if you want, you can solve it also. Everyone, is it okay? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So after that, one more relation we already know from this electromagnetic wave, that is E equals to BC. So E maximum, that is B maximum into C. So, and we also know one more thing, C, velocity of light, that is epsilon naught mu naught. So if we know these values, from that, that means from this relation, we can put the value of electric field, then we get the whole value in magnetic field, or if we put in terms of magnetic field, then we get the whole value in electric field. So suppose if we want to put in electric field, then what we have, 1 by 4 epsilon naught. In place of EM, now we can write BM C whole square plus 1 by 4 bm square by mu naught, which is 1 by 4 epsilon naught bm square C square plus 1 by 4 bm square by mu naught, which is equals to half 1 by 4 epsilon naught bm square. In place of C square, C is 1 by epsilon naught mu naught. So in place of C square, we can write 1 by epsilon naught mu naught plus 1 by 4 bm square by mu naught. So this epsilon cancel, 1 by 4 bm square by mu naught plus 1 by 4 bm square by mu naught, which is 1 by 2 bm square by mu naught. Similarly, if we want to convert it into electric form, so we can write 1 by 2 epsilon naught em square, that is the UD average. Try to understand. If they ask you, so what happened, they can give you only electric field, they can give you magnetic field, and if they ask you what is the average energy density, 1 by 2 bm square by mu naught. And now if they ask you the electric field, in terms of electric field, same, basically this is the half of contribution, either in terms of electric field or in terms of magnetic field, and by combined, either this is if you write 1 by 4, that means it's a half contribution for electric, half contribution for the magnetic, and their contribution is exactly half. So you can add them and you can say half of the magnetic or half of the electric. Is it okay for everyone? Yes, sir. You all understand this one now, how you convert this? We already discussed this. E equals to BC and velocity of light from electromagnetic wave 1 by epsilon naught mu naught. So we put these two values and we find out this. After that, these are some definition they can ask you, or they can give you some numerical. Directly they give you the value, they give you the maximum value of electric magnetic field. You know the value of epsilon naught, so you can find out the average energy density. They can give you the electric field, you know the value of epsilon naught, so you easily find out the magnetic also, magnetic as well as electric. In any terms, they can give you the numerical also. After that, the next definition is intensity of electromagnetic wave. Intensity of electromagnetic wave.
So before I start, what do you mean by intensity? Intensity means energy per unit area per unit time. Means energy strike per unit area per unit time. So if you want to find out in SI unit, energy unit is joule, area unit is meter square, and time unit is a second. The joule per second, energy per unit time is called the power. The unit is watt. So you can write the intensity unit is watt per meter square. Also, the unit is watt per meter square. Now suppose in a suppose an electromagnetic wave is passing through a portion whose area is A and length is L. So as c is the velocity of light, so you can write c is the velocity of light into, for a very small time, dt. If we suppose dt is a very small time, yeah, del t is the very small time. So how you define intensity? You define intensity as energy per unit area per unit time. That is the definition of intensity, ki energy per unit area per unit time. And what do you mean by energy density? Energy density average, that is the energy stored per unit volume. So energy stored per unit volume. So what do you mean by energy stored? That is energy density average into volume. Is it okay? Everyone, is it okay? Energy density is energy stored per unit volume. So what about energy stored? Energy density into volume. And what do you mean by volume? Energy density average into area into length. Is it okay? Is it okay, everyone? Hello. So what you can write, that is equals to energy density average into area into C into del T. Now what is the definition of I? I is U by A into del T. So you have U, you have A, you have del T. So how much remain? That is D average into C. Are you getting it? Is it okay for everyone? Students, you understand that portion? Hello? Hello? Am Yes, I sir. audible to everyone? হ্যালো हेलो बुझते पेरेছিস Yes, sir. उत्कर्ष समझ Yes, में sir. आया मैंने क्या बोला Yes, sir. Yes, sir. कि if you see properly, energy density is energy per unit volume. So what do you mean by energy density into volume? Now what do you mean by volume? Length into area, and we know length is the velocity of light into del t. And from the definition of intensity, energy stored per unit time per unit area. So energy is in the left side, you have area in the right side, del t in the right side. So energy per unit area per unit time, that is the energy density into C, and you have already the value of energy density. So you can write half bm square by mu naught into C, or half epsilon naught em square into C is the energy density. So if you see in the book, they directly write energy, the intensity of electromagnetic wave, that is half bm square by mu naught into C, or half epsilon naught em square into C. But actually how they get this value, they get it from here. Intensity is energy per unit area per unit time, and energy density is energy per unit volume. So energy is energy density into volume, and volume is area into length. Length is as their electromagnetic wave. So velocity of electromagnetic wave into, for a very small time of a very small span of time, so del t. So from this we get the intensity of electromagnetic wave. After this intensity of electromagnetic wave, next very important is momentum of electromagnetic wave. So if
an electromagnetic wave transfer total energy U to a surface in time t. So देखो क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी mc, मास इनटू वेलोसिटी इज mc. We know energy, that is U is the energy, that is mc square. Hope all of we know that, because here c is the velocity of light and these are the electromagnetic wave. So as they are electromagnetic wave, you are not able to use half mv square. Kinetic energy or energy is half mv square. We use when you know the mass, but if you don't know the mass, don't know means you are not able to calculate that mass. That means they are electromagnetic wave. When they are electromagnetic wave, you represent energy always in terms of mc square. Is it okay? Mass converted into energy, E equals to mc square. Is it okay for everyone? Whenever the mass is converted into energy, they are electromagnetic wave. Is it okay, everyone? Yes, sir. So on that manner, on that basis, can we say mc into c, that means p, that is mc, that is u by c? Is it okay? So in terms of momentum for electromagnetic wave, p is u by c. Is it clear, everyone? Why p is u by c? Utkarsh, is it okay? Hello? Yes, sir. Okay. After that, if the wave is totally absorbed, so try to understand from class 11, this is the momentum before collision, this is the momentum after collision. If that is the P and this one is zero, that means what do you mean by zero? That energy is totally absorbed. No, no bounce back after collision. So in that case, that means the total energy is absorbed. So what about the change in momentum? Change in momentum means final minus initial. So final wala to zero, only you have the initial. So if the waves is totally absorbed, then the momentum is only u by c. And the second one, if the wave is totally reflect, so if the wave is totally reflect, then what happened? It will be just a double. So change in momentum is 2u by c. Is it okay, everyone? You understand why it is double? I think all of you remember from class 11, if you have mass into velocity, initial means positive I direction, and after collision mass into velocity minus I, this is the final momentum. So change in momentum, all impulse, final minus initial, that is mv minus I minus mvi. So what you have, 2 mvi. So change in momentum in terms of magnitude, 2 mv. I think you all remember this. In case of perfectly elastic collision, your change in momentum is 2 mv. Remember na? So same thing happen here. If it is total reflected wave, then your total momentum is 2u by c. And if it is the momentum is absorbed, then it is u by c. Is it okay? सर ये हाँ बोलो बोलो। जीरो है इसमें, हाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद जीरो हो जाता है। हाँ सर तो उसमें नेगेटिव साइन का मतलब क्या डायरेक्शन है? एनर्जी का नेगेटिव मोमेंटम का, इन इफ दे आस्क यू द डायरेक्शन, लेकिन जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा ना तो दे डोंट आस्क यू डायरेक्शन, ठीक है। अगर पूछा तो ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले वाला जो डायरेक्शन था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव साइड आएगा। ओके अच्छा, नेक्स्ट इज और यू कैन से लास्ट। सर तो फिर ये जो सेकंड वाला था सर, हाँ बोलो बोलो।
सर उसमें तो सर 0 जाना चाहिए ना, फाइनल माइनस इनिशियल डबल हो गया तो डबल कैसे कैसे जीरो होगा? 0 जाना चाहिए। डायरेक्ट तुम खुद ही देखो ना, ये था एम भी इनिशियल पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये था एम भी हाँ माइनस आई फाइनल, है ना? तो हाँ चेंज ठीक इन है सर। मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल एम भी माइनस आई माइनस एम भी आई, तो जीरो कैसे आया? या इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन यू कैन से माइनस आई, ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन जीरो कैसे हुआ? जीरो होगा अगर बिफोर एंड आफ्टर सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तब ठीक है। ये क्या हो जाता, ये भी प्लस हो जाता तो जीरो हो जाता, लेकिन ये तो ऑपोजिट उल्टा गया हो गया, ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा इसके बाद देखो एक छोटा सा है एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड हार्ज एक्सपेरिमेंट. I don't know, maybe it's not in your syllabus now after reducing 30%, but just सुन लो. Harge experiment, what is basically Harge experiment? By using Harge experiment, practically you can say that electromagnetic wave is a three-dimensional wave, and in which electric field and magnetic field, they are perpendicular to each other. Is it okay? By using Hertz experiment, we can identify or we can get the resolution that electromagnetic wave is a three-dimension wave and electric field and magnetic fields are perpendicular to each other. So for that, इस हर्ज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, हर्ज ने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था और इस दोनों कैपेसिटर के बीच में यहाँ पे एक हाईली पॉलिश्ड मेटल बॉल को रखा था which is connected with this capacitor, और जिसको एक इंडक्टर बॉक्स, इंडक्शन कॉइल, सिंपल मतलब है इंडक्टर. तो दिस वन इज इंडक्टर, दिस वन इज कैपेसिटर. सो वी कैन से दिस वन इज एल, this one is C. We can say they are LC oscillator. Is it okay for everyone if we say these are the LC oscillator? ये है वॉल्यूम इनपुट. जब मैंने स्विच ऑन करूंगा सो ये LC ऑसिलेटर का काम करेगा. इज इट ओके फॉर एवरीवन? हेलो, Yes, इज इट sir. ओके फॉर एवरीवन? तो देखो यहाँ पे ही ये है मानो स्फीयर 1, यहाँ पे है मानो ये स्फीयर 2. तो जहां मैं इसको ऑन करूंगा तो क्या होगा, अच्छा इसके साथ देखो ये ऐसा था, इसके साथ ऐसे करके, मतलब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, नॉट अप ऑफ दिस, ऐसे करके. सो दिस इज दिस लाइन, और ये जो प्लेन है और ये प्लेन है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, ये है ये वाला प्लेन और ये है ये वाला प्लेन, दे आर नॉट इन द सेम लाइन ना. इसके साथ ये देखो ये दोनों पूरा पूरी परपेंडिकुलर हुआ ना, परपेंडिकुलर हुआ ना. इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का है, और ये दिस एंड दिस प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे करके एक मेटल कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, जिसके यहाँ पे गैप है, और इसके भी यहाँ पे एक वेरी स्मॉल हाईली पॉलिश्ड मेटल स्फीयर है. ठीक है, ये एकदम सर्कुलर कॉइल है. ठीक है, तो व्हेन यू स्विच ऑन, यहाँ पे क्या होगा, as they are very small radius sphere, so first of all electric field 1 by 4 pi epsilon naught q by r means inversely proportional to r square, and due to that very less space, यहाँ पे क्या होगा, एक स्पार्क होगा, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. इज इट ओके? यू अंडरस्टैंड दिस? ड्यू टू एलसी ऑसिलेटर यहाँ पे एक स्पार्क होगा, और इस स्पार्क के साथ साथ तुम देखोगे यहाँ पे भी एक स्पार्क जनरेट होगा. अब देखो इसके साथ इसका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, इसके साथ इस प्लेन के साथ ये प्लेन पूरा पूरी परपेंडिकुलर है, प्लस यहाँ पे ओपन सर्किट है. तो यहाँ पे जो स्पार्क हो रहा है
ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एलसी ऑसिलेटर का अंदर में जो स्पार्क हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका ठीक 90 डिग्री में एक लूप है जिसके अंदर से डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये देखो ओपन स्पेस है, ठीक है। और ये भी जो मेटल है स्पार्क देना स्टार्ट करेगा, दैट मींस इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर में भी करंट जनरेट हो रहा है ड्यू टू change in electric flux, and they are as 90 degree to each other. So we can say in electromagnetic wave, electric field and magnetic field and electric field both are present and they are perpendicular to each other. Is it okay? You understand this? Hello? 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 You understand this, everyone? Yes, sir. और इसमें ये जो हर्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था दिस एलसी ऑसिलेटर से, इसका जो फ्रीक्वेंसी आया था, वी ऑल नो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा 1/√LC. so it's not a very big deal. You know the area of the capacitor, you know the strength of the capacitor, you know the strength of the inductor. तो इससे जो वैल्यू आया था 5 × 10⁷ हर्ज, और जब तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिल जाता है, so we know C equals to C is f lambda, so lambda is C by f. So 3 × 10⁸ by 5 × 10⁷, that is 30/5, 5 6 30, मतलब 6 मीटर का वेवलेंथ जनरेट किया गया था. Is it okay? Hello. Yes, sir. Okay. So after that, कि this Hertz experiment, Hertz experiment में mainly यही है कि by using Hertz experiment, we can say that electric field and magnetic field both are perpendicular to each other. In electromagnetic wave, electric field and magnetic field both are present, and current produced or due to both electric field and magnetic field means electric flux and magnetic flux. अच्छा, इसके बाद तुम लोगों को wavelength, frequency and 2 uses of each wave, that is also in your syllabus. तुम लोगों को है, एक है रेडियो वेव, नंबर 1 is रेडियो वेव, नंबर 2 है माइक्रोवेव, नंबर 3 है इंफ्रारेड, नंबर 4 है विजिबल. दिस विजिबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो विजिबल है ये हम लोगों का रेंज है, मतलब इसके कारण ही हम लोग देख पाते हैं. ये अगर नहीं होता हम लोगों में तो हम लोग नहीं भी देख पाते, तो हम लोग इतना मॉडर्न नहीं हो पाते. यूवी रे और इसके बाद है एक्स रेज, एंड द 7th इज गामा रे. तो दिस 7 रे यू हैव, इसका हर एक का रेंज, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यूज, ठीक है. तो जो वेवलेंथ है, फर्स्ट वन इज द रेडियो वेव, दैट इज ग्रेटर देन 10⁸ नैनोमीटर, एंड फ्रीक्वेंसी जो है लेस देन 3 × 10⁹ हर्ट्ज, ठीक है. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड. greater than 10⁸ nanometer. Is it okay, everyone? अच्छा, नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ? नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ? नैनो मतलब 10⁻, इसको हम अगर थोड़ा 10⁻⁻9 मीटर, मतलब 0.1 मीटर से ज्यादा. समझा? हेलो. Yes, sir. तो अभी अभी जो मैंने वेवलेंथ जो बोला था 6 मीटर, तो वो कौन सा वेव था? Radio. वेरी गुड. तो याद रखना,
0.1 मीटर का ज्यादा होगा तो वो होगा रेडियो वेव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और फ्रीक्वेंसी अगर 3 इंटू 10⁹ हर्ट्ज से लेस होगा तो वो होगा रेडियो वेव। ठीक है? and you all know what is the uses of radio waves. रेडियो वेव्स का बिना सिग्नल मतलब कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल, सो बेस्ट यूज इज कम्युनिकेशन। ठीक है? इज इट ओके? सेकेंड इज, तुम लोगों को मालूम है डॉक्टर में एक डॉक्टर आता है रेडियोलॉजी बोल के, मालूम है ना? यस सर। तो रेडियोलॉजी होता है, दैट मीन्स क्या, मेडिसिन, मेडिकल या मेडिसिन में होता है रेडियोलॉजी का यूज। मतलब तुम्हारा अपेंडिक्स कितना बड़ा है या वो रेडियोलॉजी से तुम्हारा किडनी का साइज या इंटेस्टाइन का साइज ये सब चेक कर सकता है ना? सो समझ में आ गया दो वेव। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव। सो माइक्रोवेव जो है तुम्हारा 10 to the power 5 to 10 to the power 8 नैनो में मत रखो, नैनो में मतलब 5 का इंटू 10 कितना हो गया, 10 to the -4 ना, 10 to the power -4 मीटर टू 10 to 0.1 मीटर, ये है मेरा माइक्रोवेव। और इसके लिए फ्रीक्वेंसी जो है 3 इंटू 10 to the power 9 से 3 into 10 to the power 12 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज। माइक्रोवेव का तुम लोग माइक्रो टावर्स का नाम सुना है? ठीक है? जैसे रेडर समझते हो ना? अभी जैसे इंडिया चाइना का वार होने का चांसेस है, तो रेडर का बहुत ज्यादा काम है। फिर प्लेन वगैरह जो चलता है उसको नष्ट करने के लिए ये होता है। फिर टीवी वगैरह का कम्युनिकेशन के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है? हेल्प इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और एक इसका यूज है माइक्रो ओवन का नाम सुना है? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो माइक्रो ओवन में भी इसका यूज है। इसके बाद है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का जो है ऑलमोस्ट 5 इंटू 10 to the power -3 मीटर टू 10 to the power -6 मीटर इज द इंफ्रारेड रे। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये 3 इंटू 10 to the power 12 से कितना 4.3 इंटू 10 to the power 9, 4.3 इंटू 10 to the power 19 हर्ट्ज होता है। अच्छा, मतलब वेवलेंथ जितना छोटा होगा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा। यूजेस फोटोग्राफी इन लो लाइट। तुम लोग देखना नाइट विजन कैमरा में जो लाइट यूज होता है दैट इज द इंफ्रारेड। तुम लोग जो टीवी चलाते हो, टीवी का जो मोबाइल रिमोट है, ठीक है, इस रिमोट में जो रे यूज होता है दैट इज द इंफ्रारेड। इज इट ओके? Yes. हाँ, वो नेकेड आई में नहीं दिखेगा, लेकिन अंधेरा में ले जाके देखो वो दिखेगा। ठीक है? अच्छा, रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी, रीडिंग ऑफ सीक्रेट राइटिंग, मतलब वो जो वॉल वगैरह में लिखता है ना, वो सब के लिए। अच्छा, इसके बाद है विजिबल। ये जो विजिबल है इसका जो रेंज है 3.5 into 10 to the power -7 मीटर टू 7 into 10 to the power -7 मीटर, या यू कैन से 3500 एंगस्ट्रॉम टू 700 एंगस्ट्रॉम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रेंज को याद रखना। हाँ, लगभग 3500 से 6.5 से 7000 के आसपास एंगस्ट्रॉम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस रेंज में ही हम लोग कलरफुल चीज देख सकते हैं। अगर हम लोग कलरफुल चीज देख नहीं पाते, हम लोग कलरफुल चीज बना भी नहीं पाते। ठीक है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, विजिबल का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 14 ना,
14 to 3 into 10 to the power 16 हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा एक्स रे, यूवी रे। ओहो हो, सॉरी। ये जो रेंज है 3.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज to 7 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। और एक बात है, why this is very important, because we can see because of this। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके बाद है यूवी अल्ट्रावायोलेट। अल्ट्रावायोलेट का जो है दैट इज वेवलेंथ इज 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, और इसका जो रेंज है 8 into 10 to the power 14 to 3 into 10 to the power 16 हर्ट्ज। और इसका यूजेस है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। यूवी रे यूज होता है, तुम लोग देखना आरओ यूवी है, केंट, ये सब आता है ना, इसमें यूवी लाइट यूज होता है जो जार्म्स को मारता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन फूड प्रिजर्वेशन, टू स्टडी द इनविजिबल राइटिंग फिंगरप्रिंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो समझ में आ गया। एक्सरे का जो रेंज है 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, और इसका जो है 3 into 10 to the power 16 हर्ट्ज to 3 into 10 to the power 19 हर्ट्ज। So this one is also very important। फिर है, अच्छा इसका फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख दिया है। अच्छा, यू ऑल नो द यूज ऑफ एक्सरे। एक्सरे से सबसे पहले तो हम लोग मेडिकल लाइन में एक्सरे से हड्डी का एक्सरे वगैरह कर सकते हैं, टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टू डिटेक्ट गोल्ड, डायमंड एक्सेट्रा इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड मतलब किसी का पैर हड्डी टूट गया तो हम लोग एक्सरे करते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट में देखना, बैग को अलग लिया जाता है और इंसान को अलग। इंसान जाता है मेटल डिटेक्टर के अंदर से, लेकिन बैग को जो लिया जाता है वो एक्सरे से चेक करता है कि उसके अंदर गोल्ड, डायमंड ये सब है कि नहीं। वो पूरा बैग को स्कैन करता है। इसलिए इंसान को बैग के अंदर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा अंदर में ज्यादा बार, मतलब एक ही जगह पे 4-5 बार अगर लगातार कम ड्यूरेशन में एक्सरे किया जाए तो तुम्हें कैंसर हो जाएगा। एक्सरे के बाद है गामा रे। वेवलेंथ इज लेस देन 0.01 नैनोमीटर। वेवलेंथ इज लेस देन 0.01 नैनोमीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 3 into 10 to the power 19 हर्ट्ज। ओके, तो गामा रे का भी सो मेनी यूज है। ट्रीटमेंट फॉर क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ क्या, फॉरनर क्या लिखा है, टू प्रिजर्व फूड स्टफ। अच्छा, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई की ओ मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथिलीन एक्सेट्रा। अच्छा, गामा एक्सरे का, गामा रे का एक और भी यूज है, ऑल्दो इट्स अ वेरी माइल्ड मैनर। गामा रे से हम लोग कैंसर का भी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, केमोथेरापी जो होता है उसमें अ वेरी माइल्ड में गामा रे दिया जाता है, जिसका साइड इफेक्ट्स भी होता है, देखना बाल उड़ जाता है। सो दिस इज द यूज ऑफ गामा रे। सो ये तुम्हारा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेंज, और इसका हर एक का 2 करके यूज याद रखना जरूरी है। सो देन वी कैन से दिस चैप्टर इज कंप्लीट, एंड देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट थर्सडे और फ्राइडे हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज ऑप्टिक्स। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir.